In the previous video, we have completed the pineal gland, and now in this video, we are going to learn the another important gland, that is the thyroid gland, structure of thyroid gland, and next the hormones of the thyroid gland. तो हमें पता है कि thyroid gland is located in our neck region, एंड हमारे नेक रीजन में जो पाइप है, वन पाइप दैट इज द वेन पाइप, उसे हम कहते हैं ट्रकिया, एंड उसके पीछे ऑन डॉर्सल साइड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अनदर पाइप दैट इज द फूड पाइप, एंड उसे हम कहते हैं इसोफेगस. तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, इट इज लोकेटेड ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द ट्रकिया. ट्रकिया के वेंट्रल साइड में है एंड नेक रीजन में है. तो फर्स्ट वन इज लोकेशन. कहाँ है? It is located कहाँ है? On ventral side of trachea. एंड ट्रकिया क्या है? हमें पता है कि ट्रकिया इज अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हम कहते हैं विंड पाइप. सो इट इज विंड पाइप. कहाँ है? ऑन डॉर्सल साइड. अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि थायराइड ग्लैंड कैसी है? तो थायराइड ग्लैंड की बाय लोब, दो लोब्स है उसको, लाइक, एंड these two lobes are connected by a flap of connective tissue, उसे कहते हैं isthmus. तो कैसी है? बाय लोब. इट इज बाय लोब. इट इज बाय लोब, दो लोब से बनी. एंड ईच लोब कैसे है? ईच लोब is interconnected. Each lobe is interconnected by a flap of connective tissue, and उसे कहते हैं isthmus. एंड जो लोब्स होते हैं, these two lobes, सपोज अगर ये ट्रकिया है, तो one lobe is on this side and another lobe is on this side. So each lobe is on each side of the trachea. Each lobe is connected and these lobes are connected. कैसे है? Each lobe लिखने से अच्छा होगा कि lobes, two lobes है and lobes are connected, right? And अब each lobe is located on either side of trachea. इसका मतलब क्या है कि अगर ये ट्रकिया है, if it is a trachea, that is the windpipe, then the lobes of these two glands, bilobe, one is located on this side and another is located on this side, and these are connected by, कैसे connect है? These lobes are interconnected by a flap of connective tissue, उसे कहते हैं isthmus, right? So on either side of the trachea, and कैसे है? Ventral side, right? That is the location. अगर हम इसकी डायग्राम निकालेंगे तो यू कैन सी द डायग्राम लाइक दैट. जैसे कि कैसे है? बाय लोब है, ये लोब में निकलता हूं. दिस इज वन लोब, दिस इज another lobe, this is thyroid gland, this is one lobe, another lobe, and इसके पीछे ट्रकिया. बिकॉज मैंने कहा कि दिस ग्लैंड दैट है, इट इज लोकेटेड ऑन the ventral side of the trachea and one lobe is on each side. So बीच में से ट्रकिया है, एक लोब, ये दूसरा लोब. तो इसको लेवल करूंगा, these are the two lobes. And मैंने कहा कि these two lobes are interconnected by a flap of connective tissue. This, and उसे लेवल करूंगा flap of connective tissue, and that is isthmus. So this is structure of thyroid gland. Bilobe. Two lobes are interconnected by a flap of connective tissue, that is isthmus, and each lobe on either side of the trachea, and the whole gland is bilobe and it is located on ventral side of the trachea.
ये लोकेशन। सेकेंड वन इज द हार्मोन्स, कौन से हैं ये थायराइड ग्लैंड जो नेक रीजन में है कौन से हार्मोन्स बनाती है, तो इट प्रोड्यूस द टू टाइप्स ऑफ द हार्मोन्स। कौन से? नंबर वन, फर्स्ट हार्मोन इज थायरोक्सिन, उसे कहते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन। एंड सेकंड वन इज थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी। सो दीज आर द टू हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। कौन से? थायरो टेट्रा आयोडो थायरोनिन और थायरोक्सिन, उसे ये कहते हैं थायरोक्सिन। एंड सेकेंड, दिस इज फर्स्ट, एंड सेकेंड ट्राई आयोडो thyroid, right? And then the third, that is the second. This is first category, and this is second category. That is thyrocalcitonin. Thyrocalcitonin. In short, उसे कहते हैं TCT. Thyrocalcitonin. Right? So these are the two hormones. अब हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, इफ वी टेक द सेक्शन, तो उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर दिस इज द आउटर एंड विच इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कैप्सूल विच इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, आउटर लेयर, एंड उसे हम लेबल करेंगे फाइब्रस कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल, दैट इज outer covering, fibrous capsule which is protective in it. अब उसके अंदर यहाँ से सेक्शन लिया तो उसके अंदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ थायराइड फॉलिकल्स, उसके अंदर क्या है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ थायराइड फॉलिकल्स, क्या है, these are the thyroid follicles, and these thyroid follicles are surrounded by the thyroid follicular epithelium, like that. These are thyroid follicular epithelium, and उसे कहते हैं acinal cell, acinal cells, किसके, acinal cells of the thyroid follicles, of thyroid follicles, right? देखो फिर से एक बार कहता हूँ, अगर हमने उसका सेक्शन लिया तो हाउ इंटरनली थायराइड ग्लैंड दिखती है, कैसे दिखती है, सो आउटर इज प्रोटेक्टिव, दैट इज फाइब्रस कैप्सूल, एंड इनसाइड देयर आर द थायराइड फॉलिकल्स, इसको लेबल करेंगे दीज आर द थायराइड फॉलिकल्स, these are these together we labeled here as a thyroid follicles. And thyroid follicles is made up of the thyroid follicular epithelium, जिसे हम कहते हैं acinal cells. Inside these follicles there is a cavity, a cavity है, and that cavity is filled with colloid. उसके अंदर क्या है, that cavity is filled with colloid, and that is inactive, that is inactive thyroglobulin, thyroglobulin inactive, and जब जरूरत होती है तो this converted it into the active thyroxine, right? So this is acinal cell and this is cavity, and that cavity is enclosed with the colloid, a substance, उसमें क्या है, inactive thyroglobulin, जब जरूरत होती है तो that inactive thyroglobulin is converted it into the active thyroxine by acinal cells, right? So ये जो हार्मोन है thyroxine, this is produced by acinal cells of thyroid follicles. कौन बनाता है thyroxine? That is the acinal cells of the thyroid follicles. These follicles कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट है और कैसे अटैच है, तो these are connected एक दूसरे के साथ with the help of these connective tissue, connective tissue से एक दूसरे के साथ हेल्प है। तो यहाँ पे लेबल करूंगा, ये जो है दिस, ये क्या है, these all are
connective tissue. See, right? Up second, in between the thyroid follicles के बीच में or scattered in the connective tissue में scattered, there is a group of cells scattered, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, and this group of cells is known as parafollicular cells. इसे क्या कहते हैं? Parafollicular cells. उसे कहते हैं parafollicular. So the group of cells which are present in between the thyroid follicles, scattered in the connective tissue, and उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं parafollicular cells. And ये जो parafollicular cells है, these parafollicular cells produce the thyrocalcitonin. So these parafollicular cells produces second hormone, that is thyrocalcitonin, TC. Right. So this is the two cells. First one is acinal cells of the thyroid follicles produces the thyroxine. Produces thyroxine. यहाँ पे लिखता हूँ. Produces thyroxine. Whereas the group of cells which are scattered in the connective tissue in between the thyroid follicles, parafollicular cells, and these parafollicular cells produce the thyrocalcitonin. Right. So this is the structure of the thyroid gland and hormones. Only उनका function क्या है? That will continue in the next video. So bilobe connected by the flap of connective tissue, that is isthmus. Each lobe is present on either side of the trachea. ऐसा, right? One lobe and this is second lobe. अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके अंदर थायराइड फॉलिकल्स है. And each thyroid follicle is surrounded by the acinal cells, thyroid follicular epithelium. Acinal cells thyroid बनाता है, parafollicular cells thyrocalcitonin बनाता है. So this is about the structure and hormones. In the next video, we'll discuss the hypothyroidism and hyperthyroidism.